एंड 2016 में हम मिले थे फिर, एंड दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर अस. एंड मिलन रिसेंटली हैज स्टार्टेड विद टोस्टमास्टर्स, जो मैं कल संजय और सतीश से बात कर रही थी कि एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट इन टोस्टमास्टर्स. एंड अभी उनके काफी जल्दी उठे हैं वो, लेकिन वो नॉर्मली जल्दी उठते हैं अपना बैडमिंटन खेलने के लिए. तो आज आई थिंक ही इज फॉरगोइंग हिज बैडमिंटन टू बी विद अस. सो वेलकम मिलन, एंड वी विल कम बैक टू यू इन द एंड, एंड वी कैन हियर यू एट दैट टाइम. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग. Thank you for. Okay, thank you and welcome Milin and welcome all of you. अभी आगे बढ़ते हैं. मैं अश्विन बल्लर को इनवाइट करना चाहूंगा. आज का क्लास वो लीड करने वाला है. यस अश्विन, वेलकम एंड ओवर टू यू. थैंक यू अजय. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम. तो इस प्यारी सी सुबह में, जयेश सर की प्यारी सी सुबह में आप सबका स्वागत है. और आज का टॉपिक क्या होगा, कौन बताएगा? प्लीज राइट ऑन चैट. चैट में लिखिए, गेस करिए. कंफ्यूजन. कंफ्यूजन? ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है. जो हमने कल किया था वही आज करेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस. और कल का टॉपिक क्या था वो तो बता दो. वो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना. कल जो हमने रीड किया था उसका जो लेटर था, उसका मेन जो टॉपिक था वो क्या था? यस पायल. यस पायल. Life will not postpone our death, so let us not postpone our life. ओके गुड. तो आज भी कुछ ऐसा ही है. हम आज का भी एक रीडिंग का जो है वो भी ऐसा है. तो सबसे पहले तो रीडिंग प्रैक्टिस इसलिए की जाती है क्योंकि हम जो प्रोनाउंसिएशन है, जो सामने वाला जब रीडिंग कर रहा है तो हमें भी वहां पर ध्यान रखना है और उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, और वहां पर वो कोई मिस्टेक कर रहा है, हमें उनमें से कुछ सीखना है. तो जब सामने वाला रीडिंग करता है तो हमें पूरे ध्यान से उसे सुनना है. और ऐसे ही हम, इसलिए इसका प्रैक्टिस, जो रीडिंग प्रैक्टिस है वो इसलिए रखा गया है, और उसका ट्रांसलेशन भी हम ठीक से सीख सके. ओके, तो हम आज नया टॉपिक के साथ रीडिंग करेंगे. तो अजय, शेयर फर्स्ट पेज ऑफ इट. ओके, तो ये आज हम रीड करने वाले हैं. अजय, ब्रेकआउट रूम रेडी है? यस यस. ओके, तो हम ब्रेकआउट रूम में जाते हैं. डायरेक्टली मूव इन ब्रेकआउट रूम. ओके. यस, डायरेक्टली वहां पर ही ये ट्रांसलेट और रीडिंग करेंगे, फिर वहाँ टाइम नहीं बचता है. Okay, okay. 1 minute. If anybody have network issue, please switch off your video while moving breakout room. Okay, thank you. I'll create 25 minutes. Yes, RV. मेन ग्रुप में है क्या? यस मैम, अभी अजय सर ने भेजा.
अजय आप हो क्या? मैम वो है बट उसने अपना ऑडियो कनेक्ट नहीं किया. Because he is recording. Okay, main group से who's going to start? Pranchu, you want to start? What I start? You can start reading. Okay. From group. Yeah, from the group chat. I'm just getting it on my screen. You'll have to give me a minute till then. Satish, by chance, do you have it with you? No, ma'am. Okay, no problem. I have it with me now. 1 second, I'm sharing my screen. Can you see it, Pranshu? Yes, ma'am. Okay, can you start reading? Okay. The emotions, yes. Emotions, dream, no. Emotional Dream, drama. no. Okay, ma'am. Continue, continue. Husband and wife they gifted themselves a new car for their first wedding anniversary. They drove the one. मैम उसको क्या बोलते हैं? इसको ब्रेकअप करके DOWN क्या है? डाउन. डाउन. और फिर TOWN क्या है? डाउन. टाउन. फिर क्या बन गया? डाउनटाउन. यस, डाउनटाउन. Downtown sit through the batch, read, watch a movie in a drive-in theater, यस. and finally returned home as they नहीं, returned home as they did not have a train. आप उसको ब्रेक करके, जब भी हम वर्ड्स को डिफिकल्ट होते हैं उसको तोड़ के पढ़ते हैं. GAR is what? Jar. कर. और AGE? Age. So gar age, garage. Say that, garage. Yes. Have a garage. They park the car on the street. When they woke up the next morning, they found to their utter shock. अंटर कहाँ है? यू. एन कहाँ है? Utter. अटर. Utter नहीं होगा मैम? नहीं, यूटर नहीं होगा. Utter. अटर. Utter shock that the car was missing. It had been stolen. It has been stolen. Yes, it has been. Thief. Okay, अभी next. एंजल आप पढ़ोगे? Their first car से. Their first car, their first wedding anniversary gift, and they hand. Ma'am, 1 minute.
ओके तब तक और कोई पढ़ेगा? व्रज, Yes, ma'am. पढ़ो. Their first car. Okay. Their first car, their first wedding anniversary gift, and they had barely enjoyed the car for a day. The wife could not take it. Misty-eyed, she sank into the sofa. The husband too was jolted, but his love for his wife prevailed over. Jolted. Jolted. Say that again. Jolted. Yeah, okay. Continue. The moment he hugged her from behind and said, "The car is lost, you can feel upset about it. The car is lost, you can take it easy. Either way, the car is lost. Then why not take it easy?" She glared at him, and the moment passed. 2 months later, the Okay, police okay, okay. Stop. Next person. Harvey. Harvey, can you continue, please? Okay. So, let's Okay. got the good, and the car was returned to the husband. That very evening, while driving back home from the police station, the husband rammed the car against a truck. This time it was his turn. He could not take it on returning. On returning, कहाँ पे? On returning home, misty-eyed, he sank into the sofa. The wife too was joined, but he allowed for him privacy. Okay. आप किधर से पढ़ रहे हो? Okay, Om. But Om, you continue. Om, continue. Ma'am, I am ill. आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? Yes, हाँ, पढ़ो आप. but ma'am, I am ill. Okay, continue. Ma'am, no. Ma'am, he is saying I have ill. Okay. ओम, आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैम मेरे को ताव आ गया है. क्या आ गया है? मैम ओम बीमार है ऐसा बोल रहा है. उसको फीवर है. ओके, नो प्रॉब्लम. अभी हम ये पढ़ेंगे. मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? yes, ma'am. Yes, ma'am, clear. Yes, ma'am, clearly. श्रेया, कैन यू रीड दिस प्लीज विद सो हेडिंग पढ़ो और फिर यहाँ से चालू करो. Okay. Jack and Beanstalk. जैक Once up- बीनस्टॉक. फिर यहाँ से स्टार्ट करो. Once upon a time, there lived a poor widow and her son Jack. One day, Jack's mother told him to sell their
only cow. Jack went to the market and on the way he met a man who went to buy his cow. Jack asked, what will you give me in return for my cow? The man answered, I will give you 5 magic bands. Jack took the magic bands and gave the man the cow, but when he reached home, Jack's mother was very angry. She said, You fool, he took away your cow and gave you some bands. She threw the bands out of the window. Jack was very sad and went to sleep without dinner. The next day when Okay. Now Arshi, continue. Okay, ma'am. The next day, when Jack woke up in the morning and looked out of the window, he saw that a hog beanstalk. A huge beanstalk. मतलब बहुत बड़ा. He saw that a huge beanstalk had grown from his magic beans. He climbed up the beanstalk and reached a kingdom in the sky. There lived a giant and his wife. Jack went inside the house and found the giant's wife in the kitchen. Jack said, Could you please give me something to eat? I am so hungry. The kind wife gave him bread and some milk. While he was eating, Okay. the Now giant home Bhavya, आप continue करो. Yes. While he was eating, the giant came home. The giant was very big and looked very handsome. Jack was refilled and want and hide inside the giant cried, see for fame, I see the blood and English. Take easy. हाँ એ ક્યાંથી તમે છો on returning home Take it. husbandment car Sir, ઓકે કઈ જગ્યાએ તમે અથવા બોલો મિસ્ત્રી આઈડ મતલબ શું થાય MISTY મિસ્ત્રી આઈડ ફરીથી મિસ્ત્રી બનીએ આપણે શું કે ફરીથી પાછું એવું ને એવું આપણે કંઈક કહીએ ને કે મિસ્ત્રી કે ફરી એવું ને એવું પાછી દુર્ઘટના બની એમ યસ પાછું એવું ને એવું થયું દુર્ઘટના એમ. બની તો પાછી હા. એની પછી he shocked at the sofa મતલબ એનો હસબન્ડ શોક થઈ ગયો and wife પણ સાથે થઈ ગઈ shocked and નહીં for the wife to was jolted હા બરોબર એ પણ એ થઈ ગયું but her love for him provided over the moment બધા મુમેન્ટમાં લવ ના મુમેન્ટમાં આવું થયું એનું એમ ઓકે ચલો આગળ ફાસ્ટ પછી ઓકે તો she hugged him for behind હવે એની વારી હતી એટલે એને એના પતિને હગ્ડ કર્યું અને કીધું કે the car is rammed you can feel upset about it the car is rammed you can take it easy either way the car is rammed then why not take it easy એટલે જે કાર હતી એક્સિડન્ટ થઈ ગયું બરોબર છે હવે ટેક ઇટ ઇઝી જે પેલા એની પત્ની જયારે શોક થઈ ગઈ હતી ગાડી ચોરાઈ ગઈ ત્યારે એની પતિએ એને સંભાળી હતી બરોબર છે
હવે પાછી 2 મહિના પછી ગાડી મળી અને ફરીથી એક્સિડન્ટ થયું ને પાછું એ મિસ્ત્રી બની, તો એ શોખ તો પોતે થઈ ગયો. તો એની પત્નીએ એને કીધું કે વાય નોટ ટેક ઇટ ઇઝી. ઓકે, નેક્સ્ટ કોણ? કોની વારી હતી? કીધું તું મેં પહેલા, સૃષ્ટિ. Yes, sir. ઓકે, ચલો આગળ. A logical question. When the car is lost or remade, how can anyone take it easy? But what he'll say, can you do? Feel upset if you want. Take it easy. If you want, either way, after the emotional drama, what has to be done has to be done. The police complaint has to be lodged. The car has to be sent to the workshop. The insurance has to be claimed. What has to be done has to be done. The child has failed in one of the subjects. નહીં, પેલાનું આનું ગુજરાતી આનું એ બ્રીફ કરો. પેરેગ્રાફ શું કે છે? ફાસ્ટ. Logical question. ઓકે, ચાલો હું કહી દઉં કે એક લોજિકલ ક્વેશ્ચન છે કે આ કાર નું એક્સિડન્ટ થઈ ગયું અથવા ચોરાઈ ગઈ, બરોબર છે, અને તમે કેવી રીતે ઈઝી લઈ શકો? આમાં એવું કે ટેક ઇટ ઈઝી, પણ એની સિવાય બીજો રસ્તો શું છે? તમે યુ વોન્ટ આઈધર વે આફ્ટર ઇમોશનલ ડ્રામા, આ બધું ઇમોશનલ ડ્રામા કર્યા પછી તમારે કરવાનું શું છે? વોટ હેઝ ટુ બી ડન, કે જે કરવાનું છે એ જ હવે કરવાનું છે. તો કે પોલીસ કમ્પ્લેન કરવાની અથવા ગેરેજમાં ગાડીને વર્કશોપમાં લઈ જવાની, અથવા આને ઇન્સ્યોરન્સ નું ક્લેમ કરવાનું. વોટ હેઝ ટુ બી ડન. જે કરવાનું છે એ કરવાનું. તો પછી ઇમોશનલી ડ્રામા શું કામ? ઇમોશન બરોબર છે, આપણી લાગણી હોય, આપણે કે ભાઈ કાર નું એક્સિડન્ટ થયું, આ તો જસ્ટ મિનિટ છે કે આ ભાઈ એક્સિડન્ટ થઈ ગયું, નવી ગાડી, પહેલી કાર હતી, ગિફ્ટમાં હતી, એનિવર્સરીની, ઓકે, ચોરાઈ ગઈ અથવા એક્સિડન્ટ થઈ ગયું, પણ હવે શું કરવાનું છે? ઓકે, વોટ હેઝ ટુ બી ડન. ઓકે, ચાલો આગળ, તમે જ આગળ ચાલો. Okay. સૃષ્ટિ. Yes, sir. The child has failed in one of the subjects. The father slaps the child a few times. The mother is herself on. Just minute. Okay, chalo, Her forehead several times and yes, cried. After all the emotional drama, what? Now you will have to take greater care while coaching your child that subject. He might આગળનું પેજ શું હેલો આગળનું પેજ જતું રહે છે. ના, મને પેજ તો એ જ છે ને. એમાં શું છે, ઓલો ઓડિયો આવતો હોય છે, તમે ઉપર કરશો ને એને વિડિયો ને તો એ દેખાશે. ઓકે. He might વયું જાય છે. Perhaps require special tuition. What has to be done has to be done. જતું રહે છે સર મારામાંથી. નહીં, આ પેજ નથી. ઓકે, કોને બીજું આ પેજ કમ્પ્લીટલી દેખાય છે? ફાસ્ટ. ઓકે, કોણ ફાસ્ટ વાંચી કોણ જશે? મંત્ર. ઓકે, ચાલ મંત્ર. સર મારામાં અડધું દેખાય છે. કેમ એવું થાય છે ભાઈ? હવે કઈ નાનું મોટી થાય છે? એમાં એવું નથી અશ્વિનભાઈ, શું થાય ખબર છે, આ ઓડિયો હોય ને, ફોટો આપણો એ પેજ ઉપર આવી જાય છે, એટલે એવું થાય. મારામાં તો બિલકુલ નથી દેખાતું. કઈ જ નથી દેખાતું. એક કામ કરો, ફોન છે ને, ફોન ને આડો કરી દીધો બધા.
તો આઈ થિંક દેખાશે. Yes, sir. ઓકે. યસ, ફાસ્ટ. મંત્ર. મંત્ર. ઓકે સૃષ્ટિ તમે જ ફાસ્ટ ચાલો ને આગળ પૂરું કરો. સર હું ઝૂમ કરું ને તો પાછો આવી જાય છે અડધું પેજ. આડા ફોનમાં ઝૂમ કરું ને તો. પણ એમાં ઝૂમ નથી કરવાનું રહેતું, પછી આડા ફોનમાં કમ્પ્લીટ દેખાય છે. સર ઉપરની લાઈન નો દેખાય, ઉપર ઓલું આવી જાય છે. નો પ્રોબ્લેમ. Okay, perhaps require special tuition. What has to be done has to be done. You left the milk a little longer than required on the gas stove. The boiled milk is beginning to overflow from all sides of the vessel. Scream, wait, shout, get tense, and let your BP shoot up. After all the get tense. Will shoot. Okay, continue. After all the emotional drama, now what? You will switch the stove off, remove the whistle, and clean the kitchen counter. Eventually, what has to be done will be done. ઓકે, eventually એટલે આખરે જે કરવાનું છે એ જ કરવાનું છે, બરોબર છે? ઓકે, એનું એ છે કે તમે બાળકને હોમવર્ક કરતી વખતે મારો કે જે કઈ કરો એ, પણ એની કરતા એનું મેઇન વસ્તુ છે કે એના સબ્જેક્ટ ઉપર ધ્યાન આપો. બીપી વધારવું, અને આ જે હતું કે ભાઈ બરોબર મિલ્ક છે ઉફાળો આવે અને વહી જાય તો પછી તમે રાડું નાખો કે ગમે એમ કરો, એનો કોઈ મતલબ નથી. એ સાફ કરવું પડે. તો આ માત્ર આ જે બુક છે ને માત્ર રીડિંગ માટે નહીં, પણ આમાંથી ઘણું ખરું આપણે જીવનમાં પણ લઈ જવા જેવું છે, એટલા માટે જ આ બુક રીડિંગમાં રાખેલી છે. ઓકે, આગળ કેટલો સમય છે? 56 સેકન્ડ. ઓકે, એક જસ્ટ હા બોલો. હું છેલ્લું પેજ જે છે ને એ જો થઈ શકે એનો મેન સાર છે તો એ ઝડપથી કરું. દેખાયું? Yes. ઓકે, તો હું 36 સેકન્ડ. હાઉ લોંગ વિલ યુ બેંગ અગેન્સ્ટ અ વોલ? દિવાલ સામે ક્યાં સુધી તમે બેંગ થશો? યુ મે being to bleed but the wall will never open up for you. તમે વોલની સામે ગમે એટલા ધમ પછાડા કરશો ને તો એ ખુલશે નહીં. તમારું બ્લીડિંગ લોહી નીકળી જશે પણ દિવાલ ખુલશે નહીં. હાઉ લોંગ વિલ યુ curse your luck and wait under a mango tree accepting mangoes? મેંગોના ટ્રી નીચે ક્યાં સુધી તમે આશા રાખીને બેસશો કે મેંગો નીચે પડે? યુ મે ડ્રોપ ડેડ but you not single you do just a minute. You may drop dead but not a single orange will drop from a mango tree. તમે મૃત્યુ સુધી રાહ જો તો એની મેંગો તમારા હાથમાં આવે. What is મેંગો માંથી ઓરેન્જ નહીં આવે, મેંગો ટ્રી માંથી ઓરેન્જ નહીં આવે. ઓકે, આ મેંગો સોરી. what is not is not. જે છે એ છે, જે નથી એ નથી. genuine. Yes, Ashwin. ओके, तो कौन एक्सपीरियंस बताएगा अपने अपने ग्रुप में? कंप्लीट हुआ कि नहीं पूरे पेज? यस सूरज. 1 minute, I unmute Suraj. Yes, Suraj. Yes, in our group, I am with all students like me, my age, and we are reading a half page of paragraph emotional or no, and we read a new story Vanda ma'am said, and this story is very nice. I like it, and
In our group, only one student left for 2 students left to read. ओके, तो नाइस स्टोरी आपको लगी, ठीक है। तो इसका सार क्या है, आप क्या इसके बारे में बताओगे? ये स्टोरी क्या कहना चाहती थी? इमोशन यस, बट इमोशनल ड्रामा। सर बट हमने वो पूरी नहीं पढ़ी ना। ओके गुड, हम आखिर में देखेंगे। ओके, कौन बताएगा सर नेक्स्ट? स्क्रीन शेयरिंग इज स्टार्ट। अभी चालू है? यस सर। ओके, अजय भाई, आई कैन नॉट डू इट। सॉरी, I can't see, स्क्रीन शेयरिंग नहीं है, करनी है? नहीं है, नहीं करनी है, ये व्रज बोल रहा है से है। हाँ, वो रज के कंप्यूटर पे स्पेशली शेयर हो रही होगी। ओके ओके, कौन बताएगा अपने दूसरे ग्रुप का एक्सपीरियंस? पूरे पेज खत्म हो पाए या नहीं हो पाए? यस, अर्चना जी। दोनों पेज खत्म हुए और सबने रीडिंग किया, बहुत अच्छा रहा। और ये स्टोरी का जो मीनिंग था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि किसी भी हमें लॉस्ट होता है, कोई भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, तो हमें इमोशनल ड्रामा करके बैठ नहीं जाना चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क करके उसमें सक्सेसफुल होना ही होना है, वो चाहे इंग्लिश क्यों ना हो। ओके, Thank you, what sir. has to be done has to be done. બરોબર, જે થઈ ગયું છે થઈ ગયું છે, પણ જે હવે કરવાનું, જે કરવાનું છે એ કરવાનું છે. Okay. Its meaning is that कि जो हो चुका है वो हो चुका है, अब करना क्या है हमें आगे। इमोशनली ड्रामा, इमोशन ठीक है, हमारी उनके साथ भावना है वो ठीक है, लेकिन अब उसमें जो ड्रामा है, शौक होकर बैठ जाना है, तो ऐसा नहीं है। अब करना क्या है आगे। और उसमें जो एग्जाम्पल दिए थे बच्चों का, जो कि वो होमवर्क नहीं करता है या फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो पापा और मदर कई बार उसको मारते हैं, तो ठीक है, ये सब रेगुलरी बात है, लेकिन करना क्या है। तो जो सब्जेक्ट में वो कमजोर है उसका ट्यूशन या अदरवाइज कुछ भी, लेकिन जो हमें करना है उस पर एक्शन लेना चाहिए। इमोशनली ड्रामा नहीं होना चाहिए। जो दूध है वो बॉईल होकर बाहर निकल गया, तो अब क्या करना है, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, अब साफ करना है। तो हर चीज में ऐसा है। तो ये जो हम रीडिंग करवाने का जो ये मीनिंग है, वो सिर्फ रीडिंग ही नहीं है। ये जो लेटर जो है ना, हम जो रोज रीडिंग कर रहे हैं, उस सब में से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, और बहुत अच्छी सीख मिलती है। ये हमें लाइफ में लेके जाना है, इसलिए ये सब्जेक्ट हमने, ये बुक हमने चूज की है, क्योंकि इसमें जो इसका जो सार होता है ना, वो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और कौन बताएगा आज इसमें से और क्या सीखे आप? ओके, तो हमारे ग्रुप की बात करें, मैं जिस ग्रुप में था वो, तो मेरे ग्रुप में भी वो ये पूरा नहीं हो पाया, मैं पूरा नहीं करवा सका, ये मेरी जिम्मेदारी है, और हमसे ये नहीं हो सका पूरा। लास्ट पेज फिर मैंने फास्ट लिया, लेकिन वो भी मैं खुद रीडिंग करने लगा लास्ट पेज में, पर वो भी समय नहीं रहा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स ने ठीक तरह से पार्टिसिपेंट किया था। यस संजय भाई। अश्विन भाई, हसमुख भाई हाथ उठा रहे हैं आपके लिए। He wants to say ओके something. हसमुख भाई। ओके Yes, हसमुख sir. भाई। यस। इससे यह सीख मिलती है कि हम जो भी करें ट्रूली करें, कोई भी ड्रामेटिकल से नहीं करे, और सोच कर डिस्कस कर करे, कोई भी ऐसे इमोशनल ना हो जाए। यस यस, तो यही था कि हमें उसमें लिखा था कि जो फर्स्ट कार थी, फर्स्ट वेडिंग, ठीक है, ये इमोशंस है, उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी है। पहली बार कार ली थी,
पहली एनिवर्सरी की कार थी, तो ये सब है, लेकिन अब करना क्या है, जो हो चुका वो हो चुका, ठीक है। यस उर्वशी। यस सर, जो इमोशनल ड्रामा करते हैं तो हार्ट बीट का यस बीपी बढ़ जाता है, ऐसा बढ़ उसमें भी जाता था। यस ओके, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। इसलिए इमोशनल ड्रामा नहीं करना चाहिए। यस हम उसको ज्यादा वो लेते हैं तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, हमारे बॉडी पर उसका इफेक्ट होता है, हमारे हेल्थ पर इफेक्ट होता है। ओके गुड उर्वशी। ओके नेक्स्ट। Ashwin, we have guests, so can we give chance them? Yeah, all. Okay, Vanna ji. You can also give Over to directly, Vanna no ji. problem. Milan, let's hear from you. So Milan will talk in English. I don't know how much Hindi he can speak. मैंने कभी सुना ही नहीं है कि वो बोल भी पाएगा, because so either ways, Milan, I will translate it for you like you wanted, but please go ahead. We'd like to hear you. हिंदी समझ में आता है मगर बात करने में थोड़ा डिफिकल्टी है, so Wow, that is why that is why I will stick to English. It's great. It's great to see everyone bright and early learning a new language, everything. So what I always felt is when we speak to each other, it's very important to understand each other, be it in whatever language it is. And to learn a new language and speak, it's absolutely brilliant. Over to you, Vandana. That's it. Short. That was short and sweet. That's how I like it. So कल जो मिलन ने मुझे बोला था कि मैं जो बोलना चाहूंगा वो ये है, because he had sent me an audio note कि हम एक दूसरे से किस तरह बंधे हुए हैं भाषा से, और भाषा अगर कोई सीख रहा है तो वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि भाषा ही एक चीज है जो हम एक दूसरे को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। So on that note, thank you. I think that was the shortest experience shared, or like shortest sentences used to share an experience. So thank you so much. Who would like to speak now? Jignesh, Ajay. And thank you for joining and missing your badminton. So yes, Vinna, explain about homework today, okay, please. Very good. I have to explain या आप explain करेंगे? No, you. Oh, I have to give homework. Yes. Milan, give me an idea. What should be the homework? Because हमारी साल में 2 बार बात होती है और वो मोस्टली मुझे आइडियाज ही देता है कि ये कर वो कर, वो मुझसे बहुत छोटा है उम्र में। ओके, सो होमवर्क ये है आज का कि जो आप लोगों ने आज पढ़ाई की है, जिसने इमोशनल वाला पैराग्राफ पढ़ा है, वो लोग प्लीज उसका या तो ऑडियो नोट भेज सकते हैं जो उनको समझ आया है, या वो जो नए वर्ड सीखे हैं उसके सेंटेंसेस खुद बनाएं। आपका चॉइस है, या तो आप सेंटेंसेस बनाओ या ऑडियो नोट भेजो जो आपने समझा है। दूसरा, जो बच्चे हैं उनके लिए मैं एक लिंक भेजूंगी जो हमने स्टोरी पढ़ी थी, उस स्टोरी से आप जो नए वर्ड सीखे हैं उनके मीनिंग लिख सकते हो, उन वर्ड्स के सेंटेंसेस बना सकते हो, या आप उस स्टोरी को आपने जो समझा है उसका ऑडियो नोट बना के अपने ग्रुप में भेज सकते हो। होमवर्क क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सब क्वेश्चन हो तो हैंड करता है। अजय भाई ये अनम्यूट कर दो ना सबको। Tata and bye bye. Tata and bye bye. Bye bye everyone. कोई क्वेश्चन नहीं है तो बाय बाय सबको। Okay guys, thank you. This class is over. Thank you so much. Bye bye. Bye all. Bye. Tata and bye bye. Bye. Homework, Vandana. Bye everyone. We have to get about homework. Bye bye. Bye bye.
પ્રયોગ દોરવાનો છે આકૃતિ સાથે. Bye bye. Have a good